top of the world with Times Network. And you're watching Mirror Now. Guys, thank you so much for being a part of this conversation. Kartik, Kiara and Ani sir, it's great to have you here. First of all, how is the Delhi heat treating you guys? Thank you for having us here. Yeah, thank you for having us here, and it feels hot. To be fair, we've not stepped out. यहाँ से बस terrace तक, then you will imagine the kind of heat wave that we Delhiites are experiencing. इस इंटरव्यू के बाद मैं जब एयरपोर्ट से बाहर निकल के गाड़ी तक आया तो मैंने महसूस कर लिया बहुत ज़्यादा है Absolutely. तो भूल भुलैया 2 जैसे ही 2 लग जाता है एक फिल्म के नाम टाइटल के आगे, वैसे ही सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा एनिमोसिटी शुरू हो जाती है. But strangely, there is none with this one. That's the kind of love you guys are getting. That's amazing. That's good. Yeah. How does it feel? I mean, it says a lot about both of your fan following. And both of them, like, they're together promoting the film, that these guys have worked hard, it's a beautiful film, achhi lag rahi hai. That is the response on social media. I think it's also to do with Anisa's story, primarily because Bhool Bhulaiyya 2 is a fresh story. And it's completely, I think, when we were shooting the film, we always knew that we've got a powerful script. That's the reason they're making a part 2 of it, taking it forward. But it's a new story, it's a new world. And when the trailer came out, I think people enjoyed the nostalgia, but also got into the film. Everybody's guessing who's Manjalika. Everybody's wondering what's happening, what's the storyline. The intrigue factor is working. The song has worked so well. So we're just grateful that every unit that's come out has received so much love. And Kartik, what are the kind of responses that you've been getting? One thing that is a very, very palpable thing that I could sense from the messages that I could read, managed to read, इतने सारे हैं, उसमें your comparisons with Akshay Kumar, ये कहाँ से आ रहा है? All the Akshay fans are loving Kartik Aaryan, and they're also comparing your looks, not just the way you're portraying the character, but also you looking like Akshay. But है थोड़ा सा similarity. Your leading lady agrees. But then I'm saying, but so wouldn't even. You worked with Akshay, so you would know that. I think Kartik in a good way. शूटिंग में गई अक्षय को बहुत पसंद भी करता है, बहुत फिल्में देखी है, ही इज लाइक अ फैन. और मुझे नहीं लगता कि कंपैरिजन, क्योंकि इतना बॉडी ऑफ वर्क है उनका ज़माने भर का, और कितनी भी फिल्में की है, एंड ही इज नाउ अभी तो कंपैरिजन तो नहीं, कंपैरिजन नहीं सर, लुक्स कियारा इज एग्रीइंग. एक मस्ती है ना, या दे आर वेरी गुड लुकिंग एक्टर्स. इतना तो जरूर है, वो भी बहुत हैंडसम है, ये भी वो गुड लुकिंग है, ये गुड लुकिंग है. In fact, Kartik, when I had tweeted this thing out that I'm coming to interview you guys, Ronit Roy tweeted back and said, "Tell my masti khor a big hi." Why masti khor, Kartik? रोनित सर हमेशा ऐसे बात करते हैं. बेसिकली मैं उनके साथ फिल्म कर रहा हूँ शहजादा, तो और वहाँ पे सेट पे कुछ ना कुछ ऐसे में चलता रहता है. वो बहुत ज़रूरी क्या है कि मस्तीखोर तो हैं, मस्ती करते हैं, और मुझे लगता है कि ये मैं चाहूँगा कि ये सारी ज़िंदगी इसी तरह मस्ती करते रहें, सीरियस ना हो. That's a big thing coming from your director. It speaks volumes. मुझे अच्छा लगता है ऐसे रहना, हंसी मजाक करते रहना, और वही आई थिंक वो ट्रांसलेट होता है स्क्रीन पे भी जब हम लोग की फिल्म फिर साथ में आती है सबकी. एंड इट्स नॉट जस्ट मी, सबका एक वाइब होता है कि मैं अगर ऐसा नहीं है कि मैं अकेला ही मस्ती कर रहा हूँ, सब लोग कुछ ना कुछ अकेले थोड़े ज़्यादा कर रहे थे, बाकी इनिशिएट कर सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वो हो जाएगा. लेकिन एक वो वाइब बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर फिल्म में जब आप एक फिल्म का शूट कर रहे हो, क्योंकि इतने सारे लोग उसके पीछे होते हैं. तो सब एक खुशी का माहौल रहना चाहिए जब शूट कर रहे हैं, जब प्रमोट कर रहे हैं, जब फिल्म आ रही है, रिलीज हो रही है. तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ऐसा सोच के नहीं करते. इट्स जस्ट दैट कि वैसा मैं हूँ, कियारा है, अनीस सर है, वो खुद पर्सनालिटी वैसी है सबकी. एंड इनकी एक अच्छी बात मुझे बहुत जो ज़्यादा अच्छी लगती है कि आप देखिए बहुत लोग हंसते हैं तो ऐसा लगता है हंस रहे हैं, ये बिल्कुल दिल से खिलखिला कर, और इनकी हंसी और ये जो चीज़ है वो लोगों को बहुत पसंद है.
Absolutely, and I was talking about your fans. Your fans obviously have a lot to say about it. Both your, in fact, I'll want to do like this little small segment. जब लोगों को पता चला कि भाई हम आप लोगों को इंटरव्यू कर रहे हैं, इतने सारे questions आए मेरे पास, so it बहुत ज़्यादती होगी if I don't end up asking the questions. Yeah. So let me start with your fans. जिसके नाम मेरे पास है, तो I will just take the name. This is Swarna. She's asked 3 questions. First one set of memory of both your guys which you will never forget. Kiara, I'll go with you first. From this film, one memory. Your call. A bit of what they've seen in the trailer from the Army J Tomar. That's one memory that will stay with me. That was very exciting to shoot on set. Kartik, आपकी बारी. अगेन बहुत सारी मेमोरीज हैं. सब अपने अपने अलग अलग जोन की चीज़ें इस फिल्म में बहुत कुछ है. तो चाहे वो ड्रामा हो, कॉमेडी हो, इमोशंस हो, रोमांस हो, सब एक एक लेवल पे सबके साथ मेमोरीज जुड़ी हुई. फॉर एग्जांपल जब कियारा और मैं शूट कर रहे थे हम नशे में तो नहीं सॉन्ग के लिए, वो इतनी ब्यूटीफुल लोकेशंस थी राजस्थान जयपुर में. एंड जिस तरीके का शूट वो हुआ है, अब गाना भी आउट हो चुका है, द काइंड ऑफ लव वी आर गेटिंग फॉर द सॉन्ग, वो जब हम शूट कर रहे थे तो वो मोमेंट्स बहुत ऐसे याद रहते हैं. क्लाइमैक्स व्हेन वी वर शूटिंग फॉर द क्लाइमैक्स, वो क्लाइमैक्स बहुत अनीस सर ने आई थिंक मेरे करियर का सबसे लंबा क्लाइमैक्स इन टर्म्स ऑफ शॉट टेकिंग, इन टर्म्स ऑफ अ सीन विच इज सो इलैबोरेट इन इटसेल्फ बिकॉज देयर आर टू मेनी एलिमेंट्स, टू मेनी थिंग्स हैपनिंग इन इट. तो वो जिस तरीके का क्लाइमैक्स शूट हो रहा था कि यहाँ कियारा के साथ कुछ हो रहा है, वहाँ पे किसी और कैरेक्टर के साथ राजपाल सर भी हैं, तब्बू जी भी हैं, entire cast is there, something's happening, so there are a lot of things happening. So for me that was another dramatic climax जिसकी मेमोरी बहुत distinctly मैं याद रखता हूँ. आवाज़ चली गई थी उस क्लाइमैक्स में. Oh, I heard इतना that. चिल्लाना था, इतना चिल्लाना था. तो इनिशियली तो ये बहुत ज़बरदस्त कर रहे थे. उसके बाद जब साउंड आ रहा था, अरे यार क्या कौन है? Your fans are very they wanted me to ask you this also कि भाई आवाज़ कैसी है. फैब जॉब इन क्लाइमैक्स, ही इज़ डन अ फैब जॉब और इतना अच्छा काम किया है और बहुत नया तरीके का क्लाइमैक्स लगेगा. और मुझे नहीं लगता है कि कार्तिक ने इसके पहले इस तरह का कुछ किया होगा. बट जब आप देखेंगे, अभी मैं एडिट करके पूरा अपना सब मिक्सिंग करके आ रहा हूँ, तो मुझे खुद जो मैं इतने टाइम से इस पिक्चर में इन्वॉल्व हूँ, इट वॉज, मुझे ऐसा लगा कि माय गॉड, तो इस तरह का. Wow. That's really nice. That's very nice. Okay, the second question, how was the experience working with each other, both Kiara and Kartik? Kiara? No, Kartik, you'll go first. Kartik. I mean, of course, it was so good. She is really talented and she knows. जैसे सर ने अभी बोला कि इनको पता हो, कियारा को पता है कि अगर इन्होंने अनीस सर ने बोला है कि इस सीन में इतनी स्माइल चाहिए इस रीज़न की वजह से, या इतना ज़्यादा कम करने वाली जो क्षमता है वो बहुत एक्टर्स में नहीं होती है. एंड शी डज इट सो वेल. सो फॉर मी एज अ को एक्टर टू वर्क विथ हर, every time there was a scene and when there was a direction given to her and me, मुझे अपने आप को तो संभालना पड़ता था, बट विथ हर ये इतना सही करेक्ट नोट पे थी कि वो चीज़ ऑटोमेटिकली दोनों के लिए बहुत इजी हो जाती थी एक सीन में परफॉर्म करने के लिए. सो आई वाज रियली हैप्पी विद इट एंड आई हैड फन शूटिंग विद हर बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस दैट शी नोज हर वर्क वेल. तो व्हेन एन एक्टर नोज हिज और हर वर्क, तो आपके लिए और भी ज़्यादा फन हो जाता है काम करने में, बिकॉज देन यू कैन इम्प्रोवाइज, देन यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द सेम सीन एंड यू वुडंट थिंक ट्वाइस कि अरे यार अगर मैंने इम्प्रोवाइजेशन कर दिया तो सामने से कुछ आने वाला है कि नहीं आने वाला. सो वैसी चीज़ें ऐसे कियारा के साथ नहीं होती थी एंड वी यूज्ड टू बी क्विक कि 2 टेक में 3 टेक में, एंड इट्स नॉट अबाउट कि 2 टेक में 3 टेक में करना, लेकिन इट्स अबाउट गेटिंग इट राइट. Yeah, and that give and take used to happen very organically. तो वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी. सो एंड इट्स विथ एवरी नोट, इट्स नॉट जस्ट विथ कि अच्छा ड्रामा में ऐसा है, रोमांस में ऐसा है, इट्स विथ एवरी कॉमिकल सीन्स हो,
So I had a blast shooting with her for that reason. So that's actually very beautiful for some your co-actor to say that it's very important, you know, to play off one another. So it's actually the biggest compliment that a actor can receive. Absolutely. And I want to say ditto to everything. He told me, he said, according to him, my sense of humor has become better because of him. So he is giving this indirect compliment to himself. तो पता है आज का ना तेरा ह्यूमर बड़ा अच्छा हो रहा है. क्या बात है. वो भी मेरी वजह से. So I was like, but it's true. I think you know, we spent so much time, 2.5 years together, you know, coming back to this film, to this set, that I think we've gotten to know each other so well over these last few months. And as an actor, as a person, he's got this natural, like he's just got this natural flair for comedy, and he's just very easy and light on his feet, on his you know, as an actor he's just super easy on set. He's just effortless, and I think that's why it just made it so easy. Like Sir would just give us what he needed from us from the scene, and then tuck 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 tuck. It was like playing a great game of table tennis. So it was a blast. I really had fun working. Yeah, I'm actually taking. That's very sweet. I'm taking my cue from here, and I will just put a break to this question. I'll come back to the fan questions. You know, both your journeys, obviously sabki journeys different hoti hain, but both your journeys are sort of similar in certain ways, where, you know, you were wanting to be a part of certain ventures, and now there are, you know, filmmakers making a beeline to be with both of you guys. That journey obviously speaks volumes, and I'm sure that relatability between both of you must have been there. I'm sure you have got asked this question a lot of times, but I really wanted to understand, now that you're here in a sort of comfortable space, how does it feel really? Well, I mean, you're right. We've both seen a very similar journey, you know, starting off with films that didn't give us overnight success, or no backing, no particular banner that was, you know, that we were pretty much on our own trying to make it happen, which and everyone is, and everyone has their own journey. Ours is similar. And it's funny you say this, because actually it's only in the last few days through promotions that we've actually spoken about it. Because while we were shooting, I'm sure we were aware of it, but we never really sat and spoke about it. But somewhere, things that we would do, we would understand why we were doing it. We would understand, you know, subconsciously we knew that where we're coming from, and the reason, because you want to secure yourself as an actor. You want to, you know, secure a place for yourself as an actor, and you want to keep growing. And I feel maybe now we've come into our own, into a space where we feel, I won't stay comfortable, because I never want to be comfortable. I want to feel like I'm driven and pushed every single day. So I won't say comfortable, but I will say that there's a sense of maybe fearlessness of wanting to do better, wanting to do, you know, take risks. Maybe also somewhere at the back of your head, when you have films that are doing well, then it gives you that little confidence to try something new, and hope that the audience falls in love with that vision as well. So I think just we've been lucky. We've now gotten opportunities to choose from amazing films, to work with such amazing directors, that we're just hoping that the audience now loves the choices that we make. And right now the biggest choice that we made is Bhool Bhulaiyya2, so I think all eyes on that. And Kartik, I mean, validation is a big word, but do you feel that now in this point in time in your career, and I'm talking both ways, both with the kind of projects that you've been associated with and also from the fans. I mean, wo videos viral hote rehte hain jahan pe, you know, all your fans are shouting your name, you're coming down, meeting with them. So that is the star that you are currently, and people love you for that. I mean, I'm sometimes I feel the kind of love that I get from everyone. Am I that deserving? क्योंकि बहुत ज़्यादा मिलता है जितना maybe the body of work that I have, or the number of films or the years that I've spent in this industry right now. तो कई बार ऐसी feeling भी आती है कि I feel really lucky कि जिस तरीके का वो fandom या जिस तरीके का प्यार मुझे इनसे मिलता है, and I feel grateful to them. I try to interact with them a lot. बट उससे ज़्यादा मेरे हाथ में नहीं होता है जितना, लेकिन मैं ट्राई करता रहता हूँ, एंड आई लव देम, मतलब दे नो इट ऑल्सो. वैलिडेशन जो है वो वैलिडेशन हमेशा उसकी
हर बार लगता है कि और वैलिडेशन मिले, इस चीज़ में भी मिले, इधर पे भी मिले, तो वो बार बार वो चलता रहता है। जैसा कियारा ने भी कहा कि वो कंटेंट होने की, अगर वो कंटेंट हो जाऊंगा तो फिर मुझे और वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं लगेगी और मैं फिर शायद से हार्डवर्क रोक दूंगा अपना, तो वो मैं भी नहीं चाहता हूँ। सो हाँ, एक लेवल का वैलिडेशन ज़रूर मिला है फ्रॉम प्यार का पंचनामा डेज, जब तो तब क्या होता था, तब मेरा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मार्क ये रहता था कि क्या मेरा नाम पता है किसी को, क्योंकि सब वो बोलते हैं वो लंबा डायलॉग जो बोलता है वो वाला लड़का है। तो वो पहली फिल्म या उससे पहले स्ट्रगल था कि पहली फिल्म मिल जाए, वो मिली तो उसके बाद जब वो चली तो उसके बाद ये था कि नाम नहीं पता है। वो करते करते सोनू के टीटू की स्वीटी जब हुई, देन द वैलिडेशन केम बाय कि चलो अब नाम पता है कि कार्तिक कोई है, एंड देन नाउ टू प्रूव कि अच्छा वो वाली फिल्म फ्लूक में हिट नहीं थी, उसके बाद और भी फिल्म्स हिट करनी है और भी नाम कमाना है। तो इट जस्ट गोज ऑन, बेसिकली पॉइंट बीइंग कि वैलिडेशन कभी रुकता नहीं है, यू वांट मोर एंड मोर, एंड आई वांट टू बी समवन जो बार बार प्रूव करे, और एंड पीपल शुड हैव दैट बिलीफ इन मी एज एन एक्टर कि अगर मैं कोई फिल्म कर रहा हूँ तो वो सही होगी कुछ लेवल पे। सो आई वांट दैट काइंड ऑफ वैलिडेशन नाउ, वेयर दे शुड फील दैट यार इफ आई एम अ पार्ट ऑफ दैट फिल्म, दैट इट विल मेक सेंस, इट विल हैव समथिंग टू ऑफर, एंड दैट बीइंग एंटरटेनमेंट। Do you see that luck factor also, you know, having a lot of say when you achieve the position that you're in? And why I'm asking this question is, like, I have a little backstory. So you mentioned Pyar Ka Panchnama. Obviously, at the time when the film came, people were still warming up and, you know, beginning to understand, you know, the actors who are associated with that. My brother, he was with YMCA. He said, "Do you know this guy? He was with me in YMCA. I have ragged him." I said, "Oh my God." That's how I ended up watching the film. Do you think it was actually, I'm one of the audience, right? I added to the audience fact to it also. So my brother was responsible. Do you think that kind of luck also works? The ragging luck? People to come and, you know, identify you and watch. I was in YMCA. I was in, that's funny. क्या नाम क्या है? विख्यात। मतलब सीनियर ही होंगे ऑफ कोर्स। सो व्हेन आई वाज इन डीवाई पाटिल, आई वाज स्टडीइंग इन डीवाई पाटिल, तो YMCA में मैं रहता था वहाँ पे, और मैं YMCA से ही ट्रैवल करता था फॉर माई ऑडिशंस। सो बेसिकली दैट वाज माई लोकेशन विच इज़ इन बेलापुर, नवी मुंबई। तो वहाँ से मैं जाता था ऑडिशंस के लिए, एंड वहाँ किसी को मैंने लेकिन बताया नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है। वहाँ पे सिर्फ यही था कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और बायोटेक एक कोर्स है, बीटेक है, वो कंप्लीट करने यहाँ पे आया हूँ, यहाँ रहता हूँ। लक फैक्टर वहाँ आता है जहाँ पे यू हैव टू बी एट द सो व्हेन प्यार का पंचनामा's ऑडिशन वाज हैपनिंग, सेम डे आई हैड एन एग्जाम विच आई एक्चुअली, मैंने वो छोड़ दिया था एग्ज़ाम, क्योंकि उसका रीज़न ये था क्योंकि फिल्मों के ऑडिशन का पता नहीं लगता था। सबसे ज़्यादा ऑडिशंस छोटे, मतलब एड्स का या फिर वो चीज़ों के ऑडिशंस थोड़े मिल जाते थे। फिल्म का ऑडिशन मिलना बहुत मुश्किल काम है। उसमें ये एक फिल्म का ऑडिशन मेरे को बहुत महीनों बाद ऐसा था कि कुछ लग रहा है ऑडिशन है, इसमें जाना ज़रूरी है, तो इधर आई स्किप एन एग्ज़ाम और आई गो देयर एंड आई स्किप्ड एन एग्ज़ाम। So now that could be my luck factor कि that started everything for me till date, कि skipping an exam मुझे उसमें 80 लगी है और मैं फेल हुआ था उसमें, और फिर वो वापस से एग्जाम री एग्जाम बाद में हुआ। But that was a decision that I took and it worked for me. Not that I'm suggesting anyone to do it, but this was the luck factor. Right place, right time. Right place, right time पे होना। तो maybe yeah, that works. I believe in it. Absolutely. All right. Coming back to the fan questions, इससे पहले कि आपके fans बहुत disappoint हो जाएं, this one is for Kiara. This is by Shivani. Hi Kiara, this is Shivani Rai from Delhi. Before asking any question, can you say hi to me in your sweet voice? Hi Shivani. She's a very sweet fan. I know her. My question to Kiara is, how is the experience of working with Tabu, and what are your favorite films of Tabu's? Oh my God, it's a solid one. I think it was a dream for all of us to work with Tabu ji. I think she's just such a fine actress. She's one of the best actresses in the country.
and she's unbelievable in the movie. And what I love about her, she's just such a grounded, down-to-earth person. My most favorite time on set would be listening to stories that Anisa and Tabuji would be talking to each other and sharing like purane kisses, and you know, I mean, they just had so much to share back in the day, how they used to work, and like funny incidents from set, which I feel like we don't have so many. Our generation, we really need to like start making interesting stories. Our generation is making reels. Insane stories. Conversations And I come ho gaye. think my favorite performances, apart from Bhool Bhulaiyya2, would be Maqbool and Andhadhun. Absolutely. If I'm just to take two. And okay, let's just put down. There's a list already. All right. This is for Kartik, and this is by a Twitter handle Kartik Trends. Will you do a Ask Kartik session before the release of Bhool Bhulaiyya2? ये मुझे ना बहुत दिन से ये पूछ रहे. आई थिंक आई नो द अकाउंट ऑल्सो बिकॉज ये हर दिन डे नंबर भी डालते हैं ऑफ आस्किंग हिम टू डू आस्क कार्तिक. तो वो काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ एंड आई एम नोटिसिंग इट, सो आई विल डू इट. बट मुझे हमेशा लगता है कि मैं इतने इंटरव्यूज ऑलरेडी कर रहा हूँ कि मैं आस्क कार्तिक में ऐसा नया क्या बोल पाऊँगा, एंड देन इट टेक्स टाइम टू डिसाइड टू ट्वीट तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. बट आई विल ट्राई टू डू Okay, इट. we'll do an Ask Ian ka. We'll do do that. it. We'll do make it a together. scoreboard. We'll Oh, do it that's together. nice. Yeah, Your fans will that'll be be happy. fun. All right. Yeah. This one's Kiara. What changes your feeling in yourself as an actor, an artist, from Devi in Fugly to now Reet in Bhool Bhulaiyya2, and what is the script that you're looking forward to? This is by Sonal. I think the reason I love my job is honestly that I get to get lost into these characters. It's the most, it's this, I can't explain it, but it's interesting that you get to play different characters and personalities. And I'm someone who takes a lot from my director. So I feel like I'm always looking at my director to understand what his vision is and to understand what he wants from a character. And then I try and make it my own and add everything that I can to it. And I've been really fortunate to have played very different characters throughout my journey. You know, be it Preeti, or be it Monica, be it Reet, be it Devi from Fugly that she's reminded me of, or like Nanki from Guilty, and several others. So it's been very exciting as an actor to play different roles, and I'm looking at doing many different things. I've not done an action film, I've not done a period film, so if you're making, this is my pitch to you, do consider. But these are genres I would love to tap into, and many more. I think I'm a greedy actor. I'd want to do many more Nice. different versatile characters. Okay. One last fan question. This is by Akshita Singh for Kartik. If you had one superpower, what would that be? Akshita is wanting to know this. I have your answer in my mind. I want to see if it's the same. Prompt karo. No, he'll say. I don't know, mind reading ability. I swear I knew it. I swear I knew it. Really? Seriously? I'm telling You you, knew the he sync was is going to say weird. that. She read my mind. I'm the reader. She has that superpower. That's nice. Okay, before I let you guys go, it has to be all Bhool Bhulaiyaa. जब आप ये इंटरव्यू उधर कर रहे थे तो ये जो पीछे जो ब्रांडिंग है ना वो ऑलमोस्ट गिर गया. The moment I actually left, thank God for that. Bhool Bhulaiyaa, कुछ Bhool Bhulaiyaa हुआ? The set space, anything spooky? Yeah, sir पीछे बताइए. पीछे ये जो गिरा इसलिए कि पीछे मंजुलिका थी. बट सेट्स पे थी कोई मंजुलिका? नहीं, हम लोगों ने बहुत मस्ती की है फिल्म के. ऐसे बहुत संजीदा होकर नहीं फिल्म बनाई, सीरियस होकर बहुत मस्तियाँ की है. और वहाँ पर जो इस जगह हम लोग शूटिंग कर रहे थे, वहाँ एक जिस फर्स्ट फ्लोर पे हम शूटिंग कर रहे थे, ग्राउंड फ्लोर जो था ना, उसमें मैं चाह रहा था कि वहाँ कुछ शूटिंग करूँ, लेकिन वो हमेशा बंद ही रहता था. ऑलवेज पिछले 20 साल से बंद है वो. और बहुत लोगों को जहाँ वहाँ कुछ लोग काम करते हैं उनसे पूछा तो वो वहाँ नज़दीक भी नहीं जाते हैं. अब वो मुझे नहीं पता क्यों नहीं जाते, क्या है, लेकिन कोई अजीब था. तो हमने अपने लोगों को डराने के लिए थोड़ी कहानियाँ बनाई हुई थी, लेकिन वो जगह ऐसी है कि वहाँ ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं. और अगर हम लोग तो खैर 200-250 लोग थे जब शूटिंग पे गए, लेकिन अगर आप अकेले जाएँ तो वो हिम्मत का काम है. ऐसे ही दिखने आप में कार्तिक को प्रैंकस्टर कहते हैं. मुझे लगता है सबसे बड़े प्रैंकस्टर सबसे बड़े prankster show है. इनके साथ रहे, इनके साथ रहे कि थोड़ा सा
Okay, this is who's most likely to. You can point a finger ki this person is most likely to do this. Zone out during a conversation. Most likely to. Out of the three of you. I hope you have no You're zoned out. legend. Even you are capable. Me also. दोनों ही है. हाँ, ये दोनों के हैं. Most likely to be late. भूल भुलैया में सबसे late कौन हुआ था? लेट मतलब Promotions में. थोड़ा ऐसे बाल थोड़ी आते हैं in this joke. इतना कि हाँ भाई चलो बुरा नहीं लगी. Alright guys, thank you so much for doing this. It was absolutely fun talking to all of you and all the best for Thank you. Thank you so Thank much. you so much.